Yes. Good evening, everyone. All right. So today, good evening, everyone. Just a minute. All right. So just a second. I hope the screen is visible. Yes or no? Yes. Okay. So today we are starting with company law. Okay. If I talk about the importance of company law for your CLAT PG exam, it is quite important. It's quite vital, right? Because in the previous year, if you have referred the previous year paper, right, at least, right, a comprehension has been usually asked in the CLAT PG. So yes, a comprehension is also from the Companies Act as well, right? So yes, company law is also important. Company law is quite wide also, right, with respect if I talk about its conceptual framework. But for CLAT PG, yes, we have to, compress ourselves. We have to, just a minute. I guess your voice is coming. Give me a second. Just give me a second. Huh. Okay. Sorry. Right. So yes, Companies Act. So yeah, we are going to start with the Companies Act. Okay. All right. So can anyone tell that what do you understand by the term company? What is company? Yes. What do you understand by company? Association of people. Okay. Yes. And any other feature? See, if you talk about Companies Act 2013, it has also given a definition for company. ठीक है, ये देखो first line. हाँ, perpetual succession is also there. So see, a company, how the company has been defined under Companies Act, that a company means a company incorporated under this act or under any previous company law. Okay, so this definition is given under section 2 clause 20. But do you think that this definition gives you any kind of explanation or any kind of hint through which we can understand, okay, what is the company actually? No, right? So we are going to have a definition. I mean, there is not a set definition for company, okay, but we have got certain features which makes the proper definition of company. Okay, we will go through that. So see, a company is a combined political, social, excuse me, combined political, social, economic, and legal institution, having joint capital divided into transferable shares of a fixed value, along with the features of limited liability, common seal, and perpetual succession. We we will be discussing about each and every feature which has been given over here, right? The terms which I have bold over here. Which I have highlighted over here. Okay. Public, private, foreign, small associate, holding, or subsidiary company. So these are the quite types of company. So see, in general,
The Companies Act is going to apply to these type of companies. Normal corporates, okay, body corporates, insurance companies, banking companies, companies producing or supplying electricity, company regulated by the Special Act. So company regulated by Special Act, supposedly SBI Act is there, RBI Act is there. So these type of companies, I mean, the Companies Act is going to apply to these type of companies, okay? So a company, what we have understood after going through all these things is that a company is an entity in which, you know, there are a couple of people who come together, who work together. And but okay, ye to aapka general concept hai, this is the layman thing. But what are the technical features which differentiate companies from the other entities? We have got other entities also, right? Like the sole proprietorship is there, like partnership is there, LLP is there, limited liability partnership is there. So how company stands different, okay, from all these institutes, from all these entities. And company is not a new thing. Okay, it has been way back from 1600. The company term has been was originated. Okay, company is being given from, or company is being is being formed through two terms, right? Two Latin terms, cum and pani. It means earning bread together. So company is not a new concept, right? And it's not like that from 2013 we have came across the concept of companies. No, it was way back. And what is the importance of company? Why it is important for our economy, why it is important for our general public, why it is important from the people. Let us just find it out, okay? We are definitely going through the answer. I mean, we will get the answers once we go through the features of companies, okay? So this is the main thing which you have to focus upon. So the first feature of company is corporate personality. It means that the company is having a separate personality, okay? Of course, a company is not a human being. It's not a living person. You can't, it is present on papers. It is being created by law. All right. So corporate personality, it means that a company is a separate person, and there is this landmark judgment also, which is Salman versus Salman, that deals with the principle that a company is having a separate or a distinct identity with that of the members who are working or who have incorporated the company. All right. So see, for example, Reliance is company, ठीक है? Reliance Industries Limited, RIL, ठीक है? तो उनके जो owners हैं, who are the Ambanis, okay, Mukesh Ambani and the others. The fact is that okay, it doesn't mean that his father has incorporated the Reliance Industries Limited. Okay, but still the identity of Reliance is different. It is separate from the Ambanis, okay, from the Ambani's family. So yes, it is presence. Why? How it is being separate? First of all, it is being created by law. It is present on papers. It has got its own rights and duties, but it has got its separate personality. Okay, it doesn't matter that if it is being created by the human being, it is being created by the living person, but still the company has got a separate identity. It has separate personality. All right, it is being created by law. It is present on papers. It cannot work on itself, but still it has got its own identity. That is why a company, or every company, it has got its own name. Every company has got its own assets. Okay. Second is company as an artificial person. You know that a company has been created by the law. Okay. It doesn't have limb, doesn't have mind. Okay. So it is an artificial person. It's not a living person. It is being created by law. It has got its own rights and duties. That's it. Okay? That is why it is an artificial person. Company is not a citizen. It is true. Okay? Company is not a citizen, as simple as that, because citizenship requires natural person. Okay? And company is not a natural person. Hence, we cannot say that a company is a citizen. Hence, company is not a citizen. Next is a company has nationality and residence. Yes. Indian companies are there, foreign companies are there, and every company has got its residence address also. Okay, आप कहाँ से communicate करोगे, कैसे communicate करोगे? All right. Next important feature is limited liability. It is very important. Okay.
See, limited liability means the members of the company, they have got a limited liability. Means whatever they have contributed in the company, okay, they will be limited. I mean, their liability will be limited only to that contribution. ठीक है, ये होता है limited liability का मतलब. So unlike, see, for example, if I talk about Partnership Act, under partnership, what happens? Partnership firm, the partners are having unlimited liability. Unlimited liability means they are personally liable. I mean, their liability extends to their personal estate. They can be personally liable if, loss is there, or if, there is accountability. But in case of company, whatever you have contributed, okay, whatever it is due to the member, only that much liability they can be asked for. Nothing, not even a single penny they can be asked. That is why this is one of the important feature of the company, and it is also one of the benefit also that the company is having the limited liability. Next is the perpetual succession. So since a company is an artificial person, okay, they are the shareholders, they are the directors who work on behalf of the company. So people may come, people may go, but the company is going to exist. Okay. So this is also one of the important feature that a company is having perpetual succession. लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन कंपनी वही की वही रहेगी until and unless it is being bound up. ठीक है, आप उसको बंद कर रहे हो तो फिर बात अलग है. Next is a separate property. Since company is a separate person, it can hold the assets in its own name. अपने नाम पे वो property hold कर सकता है. See, the very common example is आप कोई भी company खोल लो, ठीक है, जैसे for example Reliance है, ठीक है, कुछ भी अपना बैलेंस शीट बना रहा है, P&L बना रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है, everything, every kind of financial statement has been made under the name of the company. ठीक है, वो मुकेश अंबानी के नाम पे नहीं बनता है बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एवरी सॉरी एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बीइंग मेड अंडर द नेम ऑफ कंपनी, क्योंकि वो कंपनी का है. ठीक है, एंड कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, राइट? ओके. नेक्स्ट इज द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द कंपनी. ठीक है, स्पेशली इन द केस इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी, बहुत इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो शेयर्स को. ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. नेक्स्ट वी हैव कैपेसिटी टू sue and be sued. It's a separate person. ठीक है, company is an artificial person, though it is an artificial, but it is a person, so it has the capacity to sue and be sued, and yes, it can enter into a contract with the third party also. Okay. So these are some of the important features of company which explains us that, okay, what is company, what is the concept of company. Okay. Is it clear to everyone? Yes. Okay. Next important thing you have to see is formation of company, okay, according to section 3. If you are going to refer section 3, therein you are going to find that there are 3 types of companies under Companies Act. Public company, private company, and one person company, which we call it as OPC. Public, private, and OPC. Okay. So these 3 type of companies can be further classified into limited by shares, companies limited by shares, company limited by guarantee, companies having unlimited liability. Okay. There are 3 companies, public, private, OPC. Okay, according to section 3. There are other type of classifications also, जैसे government companies भी होती हैं, foreign company होंगी, holding subsidiary, everything is there. But according to section 3, ये आपका crux है. Public, private, and OPC. वो other further classification है. And these 3 type of companies can be further classified into limited by shares, limited by guarantee, unlimited liability. Means public company, it can be limited by shares, public company can be limited by guarantee, or public company having unlimited liability. Same is with the private company. Private company भी limited by shares हो सकती है,
या लिमिटेड बाय गारंटी होगी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, एंड सेम इज विद द ओपीसी. All right. Now let's have a comparison between these three type of companies. So public company has been defined under section 2 clause 71. ठीक है. Minimum number of persons required to open a public company, required to start a company is 7. मिनिमम 7 नंबर्स चाहिए. 7 से कम होगा तो आप पब्लिक कंपनी खोल ही नहीं सकते हो. मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट. ठीक है. फॉर अ पब्लिक कंपनी the limit of person minimum is 7, maximum is no limit. मिनिमम पेड अप कैपिटल भी पहले होता था पब्लिक कंपनी का, दैट वाज आई गेस इट वाज 5 लाख, लेकिन 2015 अमेंडमेंट के बाद वो डिलीट हो चुका है. So you can, of course, there is no concept like minimum paid up share capital as an eligibility. Next है आपका easy transfer to your shares. In a public company, if you don't want to hold up the shares of the company, you can easily transfer it. Okay. Public company name always end with the term limited. ठीक है. Public company name always end with the term limited. Okay. Now let's come to private company. Section 2 clause 68 में दिया है. Minimum number of persons is 2, maximum is 200. मिनिमम पेड अप कैपिटल इसका भी था, अब डिलीट हो चुका है 2015 अमेंडमेंट में, तो वी आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट. नेक्स्ट इज योर रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. यस, देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. वहां पे ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक रिस्ट्रिक्टेड होगा, प्रोहिबिटेड है, ऐसा कुछ नहीं है. बट द फैक्ट इज दैट ना कि आपको ज्यादा प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इफ यू वांट टू ट्रांसफर द कंपनी, sorry, if you want to transfer the shares to any other person. And private company name always end with the term private limited. ठीक है. OPC. OPC has been defined under section 2 clause 62. इसमें सिर्फ एक ही आदमी होगा, वही मेंबर होगा, वही डायरेक्टर होगा, वही सब कुछ होगा. नाम में ही लिखा है वन पर्सन कंपनी, एंड इसका जो नेचर होता है इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी. दैट्स इट. ओके. अब ये बताइए आप लोग, रिलायंस कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है? ये मैंने क्लास में भी बताया था आपको, बट स्टिल आई वांट टू अश्योर माई सेल्फ. यस. व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इज रिलायंस? पब्लिक और प्राइवेट? और गवर्नमेंट कंपनी? यस. एनी आंसर? It's a public company. Yes, it's a public company. Why it is a public company? We will definitely get the answer. All right. What is government company? Government company क्या होती है and how it is different from public company? Yes. Any answer? What is public and what is government company? Owned and run by the government. Government holds shares more than 50%. Minimum 51% ये लोग hold करते हैं government. That is why they are known as government company. So companies like Maharatnas, Mini Ratnas, जैसे कोल, गेल, ये सब है ना आपके, एनटीपीसी, ये सारे चीजें आपके सब गवर्नमेंट कंपनीज. चलो. नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कैसे होता है? ये अंडर सेक्शन 7 में होता है. व्हाई आई एम पिकिंग अप दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज बिकॉज देयर इज एन इंक्लूजन ऑफ एमओए एंड एओए. So before we go through the registration of company, let us just understand the concept of MOA and AOA. These two are the most important documents of the company. ठीक है. They are publicly available to the मतलब हाँ, they are available to the general public, MOA and AOA. But what is the concept of MOA and AOA? It is very important for us to understand. So first of all, MOA, it is being defined under section 4. Right? MOA and AOA together, they are known as the constitution of company.
MOA contains the object for which the company is being formed. This is very simple explanation to MOA. ठीक है, MOA, it identifies the possible scope beyond which company actions cannot go. If it is going, then the actions of the company will be ultra vires. It enables shareholders, creditors, and all those who deal with the company to know what its power are. ठीक है, so MOA is basically tells the general public that for what purpose the company is being formed, किस लिए कंपनी खुली है, क्या क्या उसके पावर्स हैं. अगर उस पावर के बियॉन्ड का कंपनी एक्ट कर रही है तो फिर उसके एक्ट हो जाएंगे अल्ट्रा वायर्स. अल्ट्रा वायर्स मीन्स null and void. Okay, so this is what your memorandum is, and memorandum is very important. कंपनी बनने से पहले ही मेमोरेंडम बनाना जरूरी है. आप रजिस्ट्रेशन के लिए, देखो कंपनी कैसे फॉर्म होती है, आप पहले रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे, ऑब्वियसली देयर इज और भी पीछे वाला प्रोसेस है. ठीक है, प्रमोटर से स्टार्ट होता है आपका कंपनी फॉर्मेशन. बट द पॉइंट इज दैट कि आप कंपनी रजिस्टर कराने जा रहे हो, यू शुड हैव सम डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आपके पास मेमोरेंडम होता है और आर्टिकल्स होते हैं. Memorandum tells you that what is the object of the company, what are the powers and functions of the company. ठीक है, so this is what the aim of MOA. If you are going beyond this MOA, your act will be ultra vires. You can say MOA is a Lakshman Rekha. गए तो गए बाहर. ठीक है, चलो. Now the clauses of memorandum. Through the clauses you can understand that okay, what are the powers, what are the functions of company. So देखो मेमोरेंडम में फर्स्ट ऑफ ऑल नेम क्लॉज पहले होता है. ठीक है, पहले नाम रहेगा किसका, कंपनी का, राइट. फिर होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. भाई कोई ठिकाना भी तो चाहिए, कहाँ की कंपनी है, कहाँ इसका ऑफिस है. आपको कांटेक्ट करना होगा तो आप कहाँ करोगे कांटेक्ट. ठीक है, आप कहोगे मैम ऑनलाइन कर लेंगे, फोन कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे, लेकिन एक ठिकाना तो होना चाहिए, काम कहाँ करोगे आप. ओके, सो देयर इज अ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑल्सो. वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ आपका ऑफिस है. नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज. दिस हैज टू बी मेंशन कॉशियसली. ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपका जो भी इंटेंशन है आप उसको ऑब्जेक्ट क्लॉज में आप अपना लिखिए. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल या लाइबिलिटी क्लॉज. कितना कैपिटल आप रेज करना चाहते हो या कितना कैपिटल आप रेज करोगे, ये सारी चीजें आप मेंशन करते हो किसमें, मेमोरेंडम में. एंड दैट इज अ मैक्सिमम लिमिट, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते. नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज. सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आपके सब्सक्राइबर्स का नाम रहता है और उनके पास कितने शेयर्स है, ये सारी चीजें रहती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ओपनिंग अ पब्लिक कंपनी, यू नो देयर आर मिनिमम 7 people आर रिक्वायर्ड. तो 7 लोगों का यहाँ पे डिटेल्स वगैरह दिया रहेगा. ठीक है, एंड इन केस ऑफ प्राइवेट देयर विल बी 2 मिनिमम. नेक्स्ट इज योर नॉमिनी क्लॉज, एंड नॉमिनी क्लॉज इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ओपीसी. ठीक है, ये सिर्फ ओपीसी के केस में होगा, क्योंकि देखो ओपीसी में सिर्फ एक आदमी रहता है, अगर वो चला गया तो उसके बिहाफ पे कौन होगा. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट ओनली अप्लाइज टू ओपीसी ओनली. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्लॉजेस. सम ऑफ द क्या, यही आपके एक्सक्लूसिव क्लॉजेस हैं विच इज मेंशन अंडर मेमोरेंडम. मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, पर आप देख सकते हैं. दैट नेम क्लॉज में नेम ऑफ द कंपनी टू एंड विथ ईदर लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये ऐसे दिया रहेगा. और ओपीसी के केस में ब्रैकेट में ओपीसी रहेगा. ठीक है, आफ्टर द नेम, और लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड. देन है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस. रजिस्टर्ड ऑफिस में ऑब्वियसली नेम, स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है. देन है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी ऑब्वियसली. लाइबिलिटी में आपका लाइबिलिटी या जो कैपिटल की मैंने बात कही थी, कैपिटल कितना आप रेज करना चाहते हो, वो सारी चीजें रहती है. ऑथराइज कैपिटल. लाइबिलिटी क्लॉज में रहता है कि यस मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, बतानी पड़ेगी. वो चीज मेंशन करना पड़ेगा जो कि आपके सेक्शन 3 में दिया था कि दैट द कंपनी इज बीन लिमिटेड बाय शेयर्स, या इट्स बीन लिमिटेड बाय गारंटी, या इट इज हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी. तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी. नेक्स्ट है आपका कैपिटल क्लॉज. ओके, लाइबिलिटी और कैपिटल मैंने एक साथ, चलो ठीक है. लाइबिलिटी क्लॉज कभी कभी अलग भी रहता है, कभी कभी साथ में भी दिया रहता है, ऐसा कुछ है नहीं.
सो कैपिटल में आपको ऑब्वियसली बताना पड़ेगा कि कितना आप कैपिटल रेज करने वाले हो। नेक्स्ट इज योर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, दैट अ क्लॉज रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द पर्सन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन। भाई नंबर जितने भी आपके मेंबर्स होंगे उनका आपका बताना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम 7 है तो 7 लोगों का आपको वहां पे डिटेल्स देने पड़ेंगे। एंड नॉमिनी क्लॉज इज गोइंग टू अप्लाई इन केस ऑफ ओपीसी ओनली, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर मेमोरेंडम। नेक्स्ट वी हैव डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि whatever the powers and functions of companies are there, it have to be mentioned under the MOA, and the company is supposed to act within the power, within the points which it has mentioned under memorandum. If it is going beyond memorandum, obviously the doctrine of ultra wires is going to apply. Okay, there was this case Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Riche. इसमें देखो ये फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ था। क्या हुआ था? अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुआ था। व्हाई, आई टेल यू। सी देयर वाज दिस ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज जो थी कंपनी की, एशबरी कंपनी की, उसमें ये लिखा था कि मेक एंड सेल और lend or hire railway plants to carry on the business of mechanical engineers and general construction। ये आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज था कंपनी का। बट इन एक्चुअल में कंपनी क्या की थी कि दैट द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मेजर्स रिशे to finance the construction of railway line in Belgium. अब you people compare whether the actual transaction and the object clause, whether they do match। क्या ये मैच हो रहा है? क्या ये कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के विद इन काम कर रही है? उसका काम था मेक, सेल, लेंड और हायर रेलवे प्लांट्स। लेकिन एक्चुअल में उसने क्या किया? फिनेंस करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर ली मेजर्स फिशर से। तो फिनेंस टर्म आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट क्लॉज में? नहीं। तो आप वो काम ऐसा क्यों कर रहे हो जो कि आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है? सो ऑब्वियसली अगर ऐसा आप कोई भी काम करोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी रैटिफाइड इवन बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, एंड अल्टीमेटली द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अल्ट्रा वायर्स, दैट्स इट। और ऐसे एक्ट को, ऐसे ट्रांजैक्शन को आप रेटिफाई नहीं कर सकते, आप अप्रूव भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, रेटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूव करना बाय दी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ऐसा जो ट्रांजैक्शन है वो अप्रूव भी नहीं होगा और आपका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, अब आते हैं, ये देखो, अगर आपको फॉर्मेट देखना है रिगार्डिंग एमओए एंड एओए, आप टेबल ए देख सकते हैं। ठीक है, एमओए वहां पे दिया गया है, टेबल ए से लेके ई तक एमओए का दिया गया है आपका, और टेबल एफ में आपका एओए का दिया गया है। ठीक है, ओके, चलो अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इट इज बीन, जस्ट अ मिनट, इट इज बीन गिवन अंडर सेक्शन 5। अब कैन एनीवन टेल दैट व्हाट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? Recording in progress. What is articles of association? Anyone? Rules and regulations of the company? Yes. 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 So it contains, सामने भी दिया है आपके, कि that it contains internal rules and regulations of the company. It contains regulations that includes the matter. ठीक है, इंटरनल मैटर्स जो होते हैं, इंटरनल रिलेशनशिप जो होती है बिटवीन मेंबर्स इंटर से, दैट इज गोइंग टू बी मेंशन्ड बाय द आर्टिकल्स। आपने एक तरफ मेमोरेंडम बता दिया कि पावर्स क्या है कंपनी की, कैसे कंपनी चलेगी, क्या काम है उसका, कितना कैपिटल है, सारी चीजें, कितने लोग हैं, सब चीज आपने बता दिया। ठीक है, अब आर्टिकल्स को भी आपको बताना पड़ेगा कि आप जो अपने कंपनी का इंटरनल रेगुलेशन है, इंटरनल मैटर्स है, उसको आप कैसे चलाओगे, कैसे एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, आपको शेयर कैसे सब्सक्राइब करना है, आपको फॉर फीचर आपका कैसे होगा, आपका ट्रांसफर कैसे होगा शेयर्स, आप कितने डायरेक्टर्स, जैसे हाँ डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन कैसे होगा, कितने लेवल के मैनेजमेंट होंगे, ये सारी चीजें आपकी एओए में रहेगी। ठीक है, जिसको हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी कहते हैं। ठीक है, सो देखो एक नया क्लॉज ऐड हुआ था इंट्रेंचमेंट करके। ठीक है, इट मीन्स मेकिंग समथिंग मोर प्रोटेक्टिव। ठीक है, देखो एमओए
उसको ऑल्टर करना इज नॉट दैट इजी। ठीक है, आई मीन एमओए के लिए देखो, अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, खैर उतना जाने की आपको जरूरत भी नहीं है, अगर एमओए को आपको चेंज करना है तो यस, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना होगा, एंड यस वहाँ पे अप्रूवल वगैरह भी चाहिए होता है। बट एओए के केस में पहले क्या था कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके तुरंत आपका एओए चेंज हो जाता था। तो उसी चीज को थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव बनाने के लिए इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाला गया, कि हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोविजन हो आर्टिकल्स में जो कि आप जल्दी नहीं चेंज करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि देखो, कंपनी मान लो आज की डेट में मैंने फॉर्म की, अब मैं पता नहीं कब तक रहूंगी नहीं रहूंगी, तो मेरे आगे जो भी आएगा, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपनी रनिंग स्मूथ रनिंग, हो सकता है कुछ ऐसे अपने प्रोविजन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कर लूं। जैसे डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन में रिस्ट्रिक्टेड कर ली, या फॉर फीचर ऑफ शेयर वाला जो फीचर है मैंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। इंट्रेंचमेंट प्रोविजन उसको उसके लिए बनाए। ठीक है, सो क्या होता है कि जो इंट्रेंचमेंट प्रोविजन है, आप ये कब कर सकते हो, इट कैन ओनली बी मेड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ऐसा नहीं कि आप बाद में किसी प्रोविजन को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में है कि यस ये पर्टिकुलर मैं जो प्रोविजन है इसको मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ, तो आप ये शुरुआत में ही कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पब्लिक कंपनी है आपकी, ठीक है, अगर कोई इंट्रेंचमेंट करना है आपको किसी भी पर्टिकुलर इंटरनल रेगुलेशन को, यू कैन डू थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। और प्राइवेट कंपनी में तो अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखो प्राइवेट कंपनी में बहुत वैसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत ठीक है, शेयर होल्डर्स डेफिनेटली रहते हैं, लेकिन वहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर क्वाइट थोड़े से रिड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, वहाँ इतना इशू नहीं है जितना आपका पब्लिक कंपनी में है। ओके, अब एओए भी, एओए से रिलेटेड, चलो ये तो आपको हो गया। अब आते हैं रेलिवेंट डॉक्ट्रिन्स पे। दो डॉक्ट्रिन्स होती हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, आपने जरूर पढ़ा होगा अपने कॉलेज में। सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ये मतलब होता है, देखो, हाँ, Doctrine of constructive notice. What does it mean? MOA and AOA, they are publicly available for any interested person to go through the doctrine of constructive notice. States that any person entering into a contract which the company will be presumed to have gone through the under. देखो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, then the obligation is upon me that I should go through the MOA and AOA. वो मेरा हेडेक है। ठीक है, कि मैं एमओए और एओए पढ़ के जाऊं कंपनी का। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बाद में फंसी, जो कि ऑलरेडी आपका एमओए और एओए में दिया गया है, तो फिर वो मेरी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंपनी डिफेंस ले लेगी किसका, इस डॉक्ट्रिन का डिफेंस ले लेगी, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। वो कहेगी मैंने तो ऑलरेडी ये सारी चीजें बताई है, पब्लिकली अवेलेबल है, अब वो आपकी गलती कि आप कुछ और समझ के हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। So this is the defense which is available to the company. It protects the interest of the company and its subscribers against the persons who remain ignorant due to due diligence. ठीक है, this is what is known as doctrine of constructive notice. All right. Next है, sorry, doctrine of indoor management. This is just opposite to constructive notice. So indoor management जो doctrine है, that is a defense which is available to the outside people. अगर for example if I want to enter into a contract with the company, तो मैं already जो आपका available MOA है and AOA है वो मैं पढ़ के जा रही हूँ। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगी ना कंपनी से, कि जैसा आपने लिखा है एमओए और एओए में, आप वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, आपका प्रॉपर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सारी चीजें अपनी फिक्स करके रखी है। मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगी, इसके बियॉन्ड में जाके नहीं देखूंगी कि वाकई में आपने वो सारी चीजें कंप्लीट की है या नहीं की है। सो देखो, बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, it protects the external members of the company, जैसे शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स हैं। They presume that internal proceedings as per the document submitted to ROC. एक केस था आपका रॉयल ब्रिटिश रैंक वर्सेस टर्कॉन, जिसमें कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वाज इवॉल्व्ड, that the outsiders are bound to know the external position of the company, but they are not bound to know its indoor management.
अब इंडोर मैनेजमेंट में एक्चुअल क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है, ये हम मेरे से मतलब नहीं है। बीइंग अ थर्ड पार्टी, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैंने आपके एमओए पढ़ लिया, एओए पढ़ लिया, मैं ये सेटिस्फाइड हूँ, अब मैं आपके साथ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आपकी जो जितने भी आपने जो जितने भी प्रोसीजर्स दे रखे, जितना भी रूल्स दे रखा है, वो सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. So these were the concepts regarding AOA and MOA. Now let's come back to the registration of the company. So registration of the company, how it is being made under section 7. आपको दो documents चाहिए, MOA चाहिए, AOA चाहिए, साथ में it should be duly stamped. Now, next आपको जो चाहिए, that is a list of directors wherein the details regarding their names, occupation and addresses mentioned. जब आप कंपनी फॉर्म करोगे, ठीक है, कंपनी फॉर्म करने के बाद आप कहाँ जाओगे, आरओसी के पास जाते हो, विच इज नोन एज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. हु इज इट आरओसी? आरओसी इज द फील्ड ऑफिसर होता है, ठीक है. हर स्टेट में आपके आरओसी लोकेटेड हैं, ओके. कंपनी से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं, कितनी कंपनी फॉर्म हो रही हैं, कितनी कंपनी बंद हो रही हैं, कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी में कब कब मीटिंग हो रही है, सारी चीजें इंटीमेट करनी होती है किसको, आरओसी को, ठीक है, राइट. सो अगर आपको कंपनी रजिस्टर करनी है, डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू दी आरओसी. आरओसी के पास आप कैसे जाओगे, एमओए एओए लेके जाओगे, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स लेके जाओगे, रिटन कंसेंट उनका लेके जाओगे, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन विच शुड बी साइन बाय द एडवोकेट, सीए और सीएस, ये और करके है, ठीक है, कॉमा नहीं है, और लिखा है यहाँ पे. स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन इन तीनों का किसी का भी चल जाएगा, तो तब आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है. अब भाई देखो, डिजिटल जमाना है, आपको जाने की जरूरत नहीं है. अब आप एमसी के वेबसाइट पे भी जाके सारी चीजें अपलोड कर दो, तो अब महीने भर के अंदर आप कंपनी अपना फॉर्म कर सकते हो, ठीक है. चलो, ये तो हो गया. अब देखो, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आरओसी उसे चेक करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा. इफ ही इज सेटिस्फाइड, ही इज गोइंग टू इशू व्हाट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है. सर्टिफिकेट ऑफ आपको इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, एंड इट इज द एविडेंस दैट द कंपनी, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी कंपनी फॉर्मेशन की, वो आपने प्रॉपरली कंप्लाई कर ली है, ठीक है. दिस इज व्हाट इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. फिर आता है नेक्स्ट, आपका आता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने इसे कुछ डिटेल्स लिखे हैं, आप पढ़ सकते हो, या मैं शॉर्ट में भी बता दूं. देखो 2013 से पहले क्या था, जो आपका ये है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो डिक्लेरेशन है, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी को देना होता था, एंड वही कंपनी देती थी जिसके पास शेयर कैपिटल था. यू नो द थ्री क्लासिफिकेशन: कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, लिमिटेड लाइबिलिटी, सॉरी, लिमिटेड बाय गारंटी, और हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी. तो जो आपकी पब्लिक कंपनी है हैविंग शेयर कैपिटल, यही इन्हीं लोगों को रिक्वायरमेंट थी सीओबी ऑब्टेन करने की. लेकिन 2013 के बाद, एक्सक्यूज मी, सारी कंपनीज विच इज हैविंग द शेयर कैपिटल, मतलब प्राइवेट कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल, ओपीसी हैविंग द शेयर कैपिटल, all companies having the share capital, they are required to obtain certificate of commencement of business. अब ठीक है, देखो, आप आरओसी के पास गए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिया. now he has provided you what, certificate of incorporation. after getting certificate of incorporation, ऐसा नहीं है कि आप शुरू कर दोगे, आप कंपनी फॉर्म हो गई, अब चलो चलो लोन ले ले, चलो चलो चला लें, फैक्ट्री चला लें, ये सब कर ले, वो सब कर ले. क्या कहते हैं वो आजकल चल रहा है ना, आपका पब्लिक ऑफर इतना चल रहा है, आईपीओ ले आए, ये सब कर लें, सब हो गया. नहीं, you have to get the certificate of commencement of business. You have to assure कि, मतलब देखो, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है कि जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिला ऑफ इनकॉर्पोरेशन, just after getting the certificate of incorporation, the director of the company has to declare कि whatever the legal prerequisites were there with respect to the formation of company, they have already met it, okay. And this declaration has to be made within 180 days from getting the that certificate of incorporation. ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है. So just after getting the certificate of incorporation,
द डायरेक्टर हैज टू डिक्लेयर विद इन 180 डेज कि हाँ हमने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली, क्योंकि कई फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है। एंड इट्स नॉट द फॉर्मेलिटीज ओनली रिलेटेड टू द एमओए और एओए, और भी फॉर्मेलिटीज होती है, मीटिंग वगैरह भी करना होता है। तो सारी चीजें कंप्लाई हो चुकी है। अब आप हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दे दीजिए। किसको बोलेंगे? आरओसी को बोलेंगे, आरओसी देगा। जब तक ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिलेगा ना, कंपनी लोन तक नहीं ले सकती, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो ये आपका प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, बेसिक सा चीज है, दैट इज व्हाई यहाँ पे मैंने बता दिया। दिस वाज अबाउट योर सेक्शन 7, ठीक है। सेक्शन 7 में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद यू हैव टू डिक्लेयर विद इन 180 डेज, एंड देन आफ्टर देन एंड देयर आफ्टर यू विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ये आपका सेक्शन 10A में दिया है, ठीक है। दैट्स इट। Now let's move. I hope it is clear to everyone till here. Is it clear? Type yes. If it is no, type no. Yes. Is it clear? What after section 10? Where beta? Section 10A में आपका दिया है that you have to obtain certificate of commencement of business. What is your question, Archana? Yes. So that is what I'm telling you. Okay. अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने आरओसी लिख दिया है। Certificate of commencement, just to obtain it, it's a declaration. The it has to be filed by the director, and ROC is going to issue the certificate. ठीक है, ये दो लाइन मिक्स हो गई है यहाँ पे, just ignore it. So the declaration indicates that the company is operationally ready to engage in the business activities. It also confirms that the company has met all necessary legal prerequisites. यही तो मैंने बताया आपको। इज इट क्लियर नाउ? ये लैंग्वेज थोड़ा सा यहाँ पे हाँ मतलब लाइक थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा इग्नोर कर देना। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला कंपनी को, फिर 180 डेज के अंदर द डायरेक्टर हैज टू गिव अ डिक्लेरेशन कि हाँ सारी चीजें जो लीगल प्रिक्विजिट्स हैं ये सारी चीजें कंपनी ने मीट की है। नाउ दे आर गोइंग टू रिक्वेस्ट टू द आरओसी की आरओसी जो अभी आपका रजिस्ट्रार है कि दैट वी हैव मेट all the legal prerequisites. Now please issue us the certificate of commencement of business. ठीक है, so the ROC is going to issue the certificate of जो भी है आपका COB issue करेगा, and then the company will be able to run its business activities. ठीक है, लोन वगैरह उठा सकता है एंड बाकी जो चार्ज वगैरह और भी कई पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कर सकता है कंपनी, फुल फ्लेजेड हो सकता है दी रनिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस, ओके, चलो परफेक्ट। नाउ देयर इज अ स्मॉल डॉक्ट्रिन, वैसे तो पूछा नहीं जाता है बट सिंस इट्स अ बेसिक तो एक बार आप लोग देख लो। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ठीक है, या लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल, ये आपने पढ़ा भी होगा। ये होता क्या है बेसिकली, that the court will break through the corporate shell and apply the principle or doctrine of what is known as lifting of piercing of corporate veil. You know that a company is an artificial person. It doesn't have its own mind and live. वो कैसे काम करेगा? कैसे काम करता है कंपनी? It acts through the shareholders or directors.
अब मान लो कि कंपनी का जो डायरेक्टर है वो फ्रॉड है या ही इज कमिटिंग एनी काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हु इज गोइंग टू पे फॉर दैट? हुज लायबिलिटी विल अकर देन? कंपनी की लायबिलिटी अकर होगी। तो ऐसे तो फिर ऐश है डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर्स फ्रॉड करते रहेंगे लोगों के साथ और कंपनी पे लायबिलिटी लगता रहेगा। कंपनी में किसके पैसे लगे होते हैं? जनरल पब्लिक के लगे होते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी है तो जनरल पब्लिक के पैसे लगे रहेंगे, तो जनरल पब्लिक का पैसा होगा कॉम्प्रोमाइज और डायरेक्टर करेगा मजे। ऐसा होना चाहिए? ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये काफी पुराना डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इसके अकॉर्डिंग व्हाट डज इट कन्वे दैट in case if there is if there is any kind of fraudulent activity on behalf of the company, then the court is going to break through the corporate shell and apply the doctrine of, I mean, this corporate veil. The court will look behind the corporate entity and take action as though no entity is separate from the members existed, and make the members or the controlling person liable for the debts and obligations of the company. ठीक है, तो अगर मान लो कॉर्पोरेट के थ्रू कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहा है तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्पोरेट पे लाइबिलिटी अट्रैक्ट होगी। नो, द कोर्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू कंसिडर द पर्संस हु आर कंट्रोलिंग द कंपनी। ठीक है, बिकॉज दे आर द, आई मस्ट से कि दैट yes, they are the real persons who are executing the company's activities. ठीक है, they are the persons who are managing the corporate affairs. So yes, they will be the directors or shareholders, whoever was liable for that particular fraudulent activity, they will be liable for the debts or whatever the obligations. They will be held liable for the fraudulent activity which they have committed. So ये एक छोटा सा डॉक्ट्रिन है कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, इसके कुछ केसेस भी हैं, जॉन्स वर्सेस लिपमैन और एनरेज सर दिनशा मानिक जी। ठीक है, ये काफी पुराने केसेस हैं, एक बार आप देख सकते हो, बहुत सिंपल भी है, बट उतना मैं इनकरेज नहीं करूंगी ये देखने के लिए, क्योंकि इतना वैसा नहीं पूछा जाता है क्लैट पीजी में आपके। चलो नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, विच इज प्रमोटर। Promoter is also the basic thing which one must know, because promoter is the person through which the concept of company originates. ठीक है, I mean ओरिजिनेट इन द सेंस कि प्रमोटर ही एक ऐसा पर्सन होता है जो सोचा रहता है कि हाँ उसको कंपनी फॉर्म करनी है, फिर वहां से सारी कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, सो प्रमोटर इज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69। ठीक है, इसका डेफिनेशन सही दिया है, आई मीन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आई मस्ट से। Promoter means a person who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92. Who is a promoter? Promoter जिसका नाम prospectus में दिया है। Now your next question will be what is prospectus? We will discuss, maybe I guess we have a time left, no? We have time. So prospectus, अभी मैं बता देती हूँ, prospectus is your document। ठीक है, एक आपका डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप एडवर्टाइज करते हो कि आपकी कंपनी, या आप देखो आजकल बहुत आईपीओज आ रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जो कंपनी लिस्टेड होती है, लिस्टेड का मतलब जो पहली बार आपका जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, दो ही तो स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी, अगर वो कंपनीज वहां पे लिस्टेड हो रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नाउ एंड उनको क्या कहते हैं, पैसे की जब जरूरत होती है कंपनी को, दे रेज आईपीओ। ठीक है, वो आईपीओ लाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, जनरल पब्लिक से पैसे उठाते हैं। तो कैसे उठाएंगे, कैसे इंफॉर्मेशन पास करेंगे जनरल पब्लिक को कि क्या कंपनी करती है, क्या फंक्शंस है, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, सारी चीजें तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू करती है। सो प्रोस्पेक्टस इज, यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ एन एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, which is being issued to the general public or to the potential investors. तो प्रमोटर का नाम ऐसे प्रोस्पेक्टस में दिया रहता है। ठीक है, या प्रमोटर इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर टू इन सेक्शन 92। तो एक एनुअल रिटर्न फाइल किया जाता है सेक्शन 92 में, तो उसमें भी प्रमोटर का नाम होता है। और
Promoter is a person who has the control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. तो promoter का देख क्या है कि they have the control over the affairs of the company. Control over the affairs of the company. You can see you can see the gravity of importance of promoter in case of company. ठीक है, वो कंट्रोल कर सकता है टू दी अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या तो डायरेक्टली करेगा या तो इनडायरेक्टली करेगा, या तो एज अ शेयर होल्डर बन के करेगा, या तो डायरेक्टर बन के करेगा, या तो अगर उसको लेबर भी बनना है कंपनी का, वो उस पोजीशन में भी वो एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अदरवाइज यहाँ पे लिखा है, तो वो कोई भी पोजीशन होल्ड करके ही कैन कंट्रोल टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज और in accordance with whose advice, directions, or instructions of the board of directors, in accordance with whose advice, directions, or instructions, the board of directors of the company is accustomed to act. Accustomed is a, I must say, important term hai yahan pe. Accustomed means habituated. So, on whose advice? ठीक है, the board of directors, they are accustomed, they are habituated to act as per the advice, directions or instructions of the promoter. ठीक है, so these are the 3 points which very well explain about the promoter. ठीक है, in a layman language, if I say who is promoter, promoter is a person who conceives the idea to form a company. इसी बंदे के पास पहला आइडिया आता है to form a company. फिर वहां से ब्लूप्रिंट सारी चीजें स्टार्ट होती है कि कंपनी, कौन सी कंपनी खोलनी है, कैसे, कहाँ से फंड्स इकट्ठा करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें, कहानी कहाँ से शुरू होती है, प्रमोटर बंदे से स्टार्ट होती है ना। ये भी जो आपका है ना नेक्स्ट पैरा, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन। If a person is merely acting in a professional capacity, that is giving only professional advice to the board of directors, he shall not be treated as a promoter. कई लोग होते हैं, देखो कंपनी में बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं, सीए, सीएस, एडवोकेट, एक्सपर्ट्स होते हैं पर्टिकुलर फील्ड के। मान लो मुझे कोई क्या कहते हैं, मान लो मुझे कोई दवाई का वो खोलना है, कंपनी खोलनी है, तो मैं डेफिनेटली कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी रेफर करूंगी, कुछ डॉक्टर्स को रेफर करूंगी, रेफर इन द सेंस कि उनसे भी एडवाइस लूंगी। तो for example, if I want to open up a company with respect, matlab like pharma company, I have to open up, and I am having a meeting, or I am taking advice from the medical experts, from some of the doctors, from some of the medical professors भी होते हैं जो, ठीक है, मतलब जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उस टाइप के। तो जो वहां पे इन लोग का तो ऐसा सिस्टम होता है ना, जो पढ़ाते हैं वही लोग कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा अपना क्लिनिकल उन लोग का चलता रहता है। खैर, दैट इज नॉट द पॉइंट। सो द पॉइंट इज दैट कि इफ आई एम रेफरिंग टू एनी अदर एक्सपर्ट, तो ऐसा नहीं है कि दोज एक्सपर्ट्स विल आल्सो बी नोन एज प्रमोटर, नो। सो दे आर एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। वो मैं उनसे एडवाइस पूछ रही हूँ, दे आर गिविंग एडवाइस टू मी। ठीक है, सो दे वोंट बी ट्रीटेड एज अ प्रमोटर। हु विल बी ट्रीटेड एज अ प्रमोटर? दीज whoever person who is having all these 3 kind of features will be considered as a promoter. Any of these 3 actually, और सब में लिखा है। ठीक है, सो ये आपका हो गया प्रमोटर। What is the legal position of a promoter? It is having a fiduciary relationship, ठीक है, and it is obliged to disclose all relevant facts and secret profits. एक सिंपल केस लॉ है विच इज अर्लांगो वर्सेस न्यू सोमब्रेरो फॉस्फेट कंपनी। पढ़ना है इसको, अगर पढ़ना है तो ऐसे ऊपर से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर योर क्लैट पीजी एग्जाम। इट्स जस्ट ओनली एक्सप्लेन कि क्या होना चाहिए लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर। ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो प्रमोटर देखो, ठीक है, कंपनी फॉर्म कर रहा है, तो इट शुड हैव अ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। it should his activity should be backed up by the trust and confidence। ठीक है, और भी मान लो कोई अगर सीक्रेट प्रॉफिट कर रहा है या रेलिवेंट फैक्ट है, वो डायरेक्टर्स को बताना जरूरी है, शेयर होल्डर्स को बताना जरूरी है। ठीक है,
सो यही आपका एक ये केस में हुआ था। नाउ एक छोटा सा टर्म है विच इज नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन अग्रीमेंट। अब देखो, प्रमोटर इज अ पर्सन जिसके पास आइडिया आया टू फॉर्म अ कंपनी। तो उस आइडिया को एक्चुअल में कंपनी में फॉर्म करने में इट डज टेक टाइम एंड इट हैज गॉट सेवरल प्रोसीजर, सेवरल प्रोसेस आल्सो इन बिटवीन। देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई फार्मा कंपनी खोलनी है एंड आई एम टेकिंग मैं इधर उधर हेल्प ले रही हूँ, फंड्स का अरेंज कर रही हूँ। तो फंड्स का अरेंज कर रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि चलो मैं फैक्ट्री खोलूंगी, ठीक है, प्लांट वहां पे डालूंगी, ये वाली पर्टिकुलर टाइप की मेडिसिन यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, सारी चीजें होंगी। तो ये जब चीजें मैं अरेंज करूंगी तो इस टाइम में काफी लोगों के साथ, थर्ड पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। So whatever agreement I have been entering before the incorporation of company, those type of agreements are known as pre-incorporation agreement. तो इनका लेके एक इशू होता है कि that what is the position और what is the relevance of, मतलब like इनकी वैलिडिटी क्या होगी प्री इनकॉर्पोरेशन अग्रीमेंट की। वैलिडिटी इन द सेंस कि देखो, अगर मैंने जैसे प्रोडक्शन के लिए, प्लांट बैठाने के लिए मैंने कुछ थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब जब कंपनी एक्चुअल में फॉर्म हो जाएगी तो ऐसे अग्रीमेंट्स का क्या होगा, इनका बाइंडिंग नेचर क्या होता है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे दी रहती है। ठीक है, देखो मैं पढ़ के बताती हूँ। द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज एंटर्ड इनटू बाय द प्रमोटर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्योंकि देखो कंपनी उस टाइम एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आएगी, जब आरओसी के पास आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7। The promoter act as an agent of the company, but here also is a tangle. If the principal, if the principal, that is company, is itself not in existence. ठीक है, promoter it does act as an agent of the company, but बात ये है कि कंपनी तो अभी तक एग्जिस्टेंस में आई नहीं है। ठीक है, so the promoters are personally liable for all the contracts, and these contracts are not binding on the company unless it accepts the contract. ठीक है, तो जो प्री इनकॉर्पोरेशन अग्रीमेंट होते हैं उसके लिए देखो प्रमोटर विल बी पर्सनली लाइबल। और वहीं अगर कंपनी आपकी फॉर्म हो गई तो वहां पे डायरेक्टर्स पहले रेटिफाई करेंगे, अप्रूव करेंगे ऐसे अग्रीमेंट को, तब जाके देन द कंपनी विल बी बाउंडेड बाय दीज टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स। अदरवाइज अगर डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया ऐसे काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स को, तो रिजेक्ट हो जाएगा, कंपनी का कोई लेना देना नहीं रहेगा उससे। वैसे तो ऐसे होगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही है, देखो प्रमोटर है, इतना पेन लेके कंपनी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली प्रमोटर भी कंपनी में काफी वाइटल पोजीशन ही होल्ड करेगा। ठीक है, तो दिस इज द रियलिटी। Ratification of contract. How ratification is being done? By passing resolution by promoters, by innovation of the contract. What will happen if no ratification is done? Promoters will be personally liable. Ratification मतलब वही approval of contract की बात हो रही है। So thus it is better to enter into a contract as the promoter of the company with the condition as to the incorporation of the company. The company can enforce these contracts if they are accepted. ये तो इतना डिटेल में मत जाइए। ठीक है, बस इतना जाने रहिए कि हाँ, प्री इनकॉर्पोरेशन अग्रीमेंट जैसा भी कोई टर्म होता है, दैट्स इट। ठीक है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 15 और 19 में काइंड ऑफ रेमेडी दी गई है विथ रिस्पेक्ट टू द प्री इनकॉर्पोरेशन अग्रीमेंट्स, कि अगर कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है अग्रीमेंट तो डेफिनेटली कंपनी विल बी लायबल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15। एंड सेक्शन 19 क्या कहता है, दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बी इन्फोर्स बाय द थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द लायबिलिटी। ये काइंड ऑफ छोटा सा रेमेडी है। चलो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको, ये आते हैं मेन कंटेंट पे। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, Part 1 is talks about public offer, Part 2 talks about private placement. पब्लिक ऑफर क्या होता है, ये देखो सेक्शन 23 से लेके 41 तक रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें कि हम लोग प्रोस्पेक्टस एंड लाइबिलिटी सारी चीजें देखेंगे। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट है, फिर आपका प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 में दिया गया। ठीक है, अब आते हैं पब्लिक ऑफर। देखो प्लीज वॉच दिस डायग्राम केयरफुली। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज।
सिक्योरिटीज का मतलब होता है उसमें शेयर्स भी होंगे, डिबेंचर्स भी होंगे, किसी भी तरह के बॉन्ड्स वगैरह अगर कंपनी इशू कर रही है तो सारी चीजें इंक्लूडेड रहती है. सो बेसिकली सिक्योरिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म, राइट? ओके. सो एवरी एंटिटी नीड्स मनी. बिना पैसे के कोई कुछ काम नहीं हो सकता, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो. ठीक है. इफ यू वांट टू रन अ कंपनी, डेफिनेटली यू नीड फंड. So if the public company wants to raise capital, how it is going to raise? Okay, how it is going to raise? So public company has got three options: through prospectus, through private placement, or through right issue or bonus issue. ठीक है. अगर पब्लिक कंपनी को पैसे उठाने हैं तो ये तीन तरीके से पैसे उठा सकती है. प्रोस्पेक्टस के थ्रू. प्रोस्पेक्टस के थ्रू ये जनरल पब्लिक के पास जाएगी कि भाई पैसे दे दो, इतना हम लोग कैपिटल उठा रहे हैं, ये हमारा ये है, क्या कहते हैं, ये हमारा बिजनेस है. दीज आर द थिंग्स विच वी विल बी फॉलोइंग. और व्हाट, दिस इज आवर टारगेट थिंग. ओके, ये सारी चीजें दिखाती है कंपनी. नेक्स्ट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट देखो बहुत ही लिमिटेड लोगों को ही इशू किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज योर राइट इशू और बोनस इशू. ये भी एक टाइप के आपके शेयर्स होते हैं. ये इनके लिए भी अलग से पर्टिकुलर सिचुएशन होता है, वो मैं आगे बताऊंगी. But what you have to notice over here is that for a public company, there are three modes of raising capital: prospectus, private placement, right issue, or bonus issue. But if it is a private company doesn't go with the prospectus. ठीक है. It has only got two modes, which are private placement and right issue or bonus issue. ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस के थ्रू जनरल पब्लिक के पास जाएगी तो फिर प्राइवेट कंपनी वो कैसे होगी भाई? प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से पैसे नहीं उठाती है. If you people follow BSc or NSC there, and you are never going to find out the private companies. वहां पे प्राइवेट कंपनीज कभी ट्रेड नहीं करती हैं. अगर प्राइवेट कंपनी को करना है तो उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा टू द पब्लिक कंपनी, तब वो जहाँ के वहां पे BSc या NSC में जाके लिस्टेड होगी. ठीक है. BSc NSC आप लोग जानते हो ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों की दोनों मुंबई में लोकेटेड है. सो पब्लिक कंपनी इफ आई टॉक अबाउट, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, दैट व्हाट थ्रू व्हिच मोड्स दे कैन रेज द कैपिटल. Yes or no? Is it clear? All right. Now let's start with the prospectus. ठीक है. So section 270, section 2 clause 70 defines prospectus. What is prospectus? It's any document described or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus referred to in section 32, shelf prospectus referred to in section 31, any notice, circular, advertisement, or any other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate. This is the definition which is being given for the prospectus under section 2 clause 70. ठीक है. और यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि that a prospectus is kind of an advertisement. It's a kind of a document that invites general public for the subscription of shares. ये जनरल पब्लिक के लिए बेसिकली बनता है, जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि हाँ ऐसी कंपनी है, ये फाइनेंशियल स्टेटस है, ये टारगेट है, ये लोग हैं, ये डायरेक्टर्स है, सारी चीजें. तो अगर कंपनी को, अरे सॉरी, तो जनरल पब्लिक को अगर अच्छी लग रही है कंपनी तो वो वहां पे इन्वेस्ट कर सकती है. ठीक है. तो प्रोस्पेक्टस इज नथिंग, इट इज अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट. और यहाँ पे दो टाइप भी दिया गया है प्रोस्पेक्टस का. चार टाइप्स के होते हैं प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस इज ऑफ 4 टाइप्स, बट yes, over here under the definition part, 2 types of prospectus is being mentioned over here. ठीक है. So
I hope you have understood that what is the crux of prospectus. Now let us just go through the types of prospectus. Okay, so we have got four types of prospectus. Shelf prospectus 31 में दिया है RHP. We can also call it as red herring prospectus 32 में. Abridged prospectus section 33 and deemed prospectus under section 25. Now, what is shelf prospectus? It is being defined under section 31. So, देखो, if I talk about the original prospectus, ठीक है, देखो, first of all, yeah, okay, देखो, जो prospectus आपका होता है ना, उसको create करना, making of prospectus is actually a tedious task and it is a cumbersome process also. So whatever statement or whatever information you are mentioning under prospectus, it has to be verified. ठीक है, it has to be verified. और verification करने में कितना टाइम चला जाता है, कितने पैसे चले जाते हैं एक prospectus फॉर्म करने में. ओके, सो जस्ट टू सॉर्ट इट आउट, अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी को इफ दे वांट टू डू मल्टीपल पब्लिक इशू विद इन अ टेन्योर ऑफ 1 year, देन दे कैन टेक द हेल्प ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो कि आपका सेक्शन 31 में डिफाइंड है. सो व्हाट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस? इट इज अ सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर मल्टीपल पब्लिक इशू. ठीक है, so once a company has filed with ROC, there is no need to file fresh prospectus at every issue. तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस का यही एक टास्क होता है, यही एक थीम है शेल्फ प्रोस्पेक्टस का, कि that if a company wants to excuse me yes, that if a company wants to issue where it is, yes, that if a company wants to issue the prospectus for multiple times, मतलब एक ही prospect, मतलब लाइक जैसे कि मान लो एक साल में उसको 2-3 बार IPO निकालना है, पैसे उठाने जनरल पब्लिक से, तो वो एक ही prospectus बना लेगी जिसको कहेगी शेल्फ prospectus, और एक साल तक यही इशू करती रहेगी prospectus टू द जनरल पब्लिक. ठीक है, इसी टाइप की prospectus को आप क्या कहोगे? शेल्फ prospectus आप कहोगे. ठीक है, सो इट्स अ सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर मल्टीपल पब्लिक इशू. ठीक है, सो देखो, as I have told you कि that making prospectus is a tedious task. It's not a simple thing. काफी पैसे जाते हैं, काफी एफर्ट भी जाता है. Okay, so just to sort it out. Okay, just to make it short, if you want to आपको मल्टीपल टाइम्स पब्लिक इशू करना है एक साल के अंदर, तो यस यू कैन टेक द हेल्प ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस. ठीक है, सो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ सिंगल प्रोस्पेक्टस, इसकी वैलिडिटी 1 year होती है. अगर कुछ मान लो 2 महीने में अगर आपको कुछ चेंज हो गया, तो आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ आप एक पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यू कैन ऑल्सो इशू, जिसमें कि आप चेंज वगैरह आप वहां पे मेंशन कर सकते हो. इसका पर्पस क्या होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस का? That any number of issue could be made during the tenure, sorry, during the tenure of the prospectus. ठीक है, during the tenure of the share prospectus, and it eases out the commercial and logistical considerations involved in raising funds. ठीक है, तो this is what the purpose of shelf prospectus is. आपको कई बार इशू करना है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस, और आप उसको एक साल तक के लिए चला सकते हो. Before purpose, हाँ, so see if there is some change in the issue, जैसे कि for example कोई भी financial information मान लो change हो रही है कंपनी की, या कुछ changes कर रही है कंपनी, या मान लो कोई नया branch if the company wants to open up, then they can mention the same change within a document which is known as information memorandum. ठीक है, so any change in the issue, it can be mentioned in the information memorandum so that the general public can be well informed and they can take the reasoned decision. That's it. Okay, देखो, validity इसकी 1 year है.
तो हो सकता है कि 1 ईयर के अंदर कुछ आपका चेंजेस हो कंपनी में, सो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में डाल दो। ओके, बिकॉज शेल्फ प्रोस्पेक्टस में तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, वॉट एवर प्रोस्पेक्टस इज बीन मेड, इट इज बीन मेड। यस, यू कैन नॉट चेंज इट। सो rather than altering the shelf prospectus, you can attach information memorandum, and therein you can give any kind of changes whatever has been made within a company. That's चलो नेक्स्ट है आपका, next type of prospectus is RHP. It is being given under section 32. Okay, so it's a type of prospectus wherein the quantum and the price of securities are being not mentioned. Price and quantity of securities, shares, they are not mentioned. देखो, what is the purpose of RHP? Let us just understand. RHP is issued prior to the final prospectus and it can be updated several times before final issue of prospectus. देखो, अगर मान लो कोई नई कंपनी है and if they want to go for IPO, they want to get itself listed in the BSE. listed होने के बाद obviously आप क्या कहते हैं, जो फाइनल प्रोस्पेक्टस होता है, जो मेन आपका प्रोस्पेक्टस होता है, उस प्रोस्पेक्टस के पहले जो आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो विच इज नोन एज RHP. तो ये जो RHP है, दिस इज, यू मे से इट्स अ काइंड ऑफ अ डेमो प्रोस्पेक्टस जस्ट टू अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, जस्ट टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस ऑफ द इन्वेस्टर्स, कि कैसा रिएक्शन रहेगा इन्वेस्टर्स का, पैसे उठा पाओगे कि नहीं उठा पाओगे, जस्ट टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है, सो RHP यू कैन से इट्स अ ड्राई रन बिफोर द इशू ऑफ द फाइनल प्रोस्पेक्टस. RHP is issued before the final prospectus. ऐसा नहीं है कि आप RHP इशू करती हो और फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले आप RHP इशू करते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, द रिएक्शंस, द टेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. ठीक है, ओके. दैट इज वाई RHP इज बीन इशूड. एंड स्पेशली वो कंपनीज करती है जो पहली बार IPO लाती हैं, पहली बार लॉन्च करती हैं अपनी कंपनी को, पहली बार यस IPO लॉन्च करती है, जो पहली बार पैसे उठा रही है कंपनी लोगों से. ठीक है, सो RHP ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्वांटम एंड प्राइस नहीं दिया रहता है एंड इट कैन बी अपडेटेड सेवरल टाइम्स बिफोर द इशू ऑफ द फाइनल प्रोस्पेक्टस. इट हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार 3 days प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन. ये तो प्रोसीजरल पार्ट है, यू कैन इग्नोर इट. SEBI has made mandatory to file RHP by companies launching IPOs. It is mandatory for the companies who are coming for the first time to launch IPO. It involves the assessment of the company's business competition by the investors. That's ठीक है. This is what the purpose of RHP is. इसमें quantum and price of securities नहीं दी रहती हैं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी. बाकी सारी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली आपकी ऑनलाइन फ्लोट होगी, इन्वेस्टर्स देखेंगे, उस हिसाब से अपना बिड विड लगाते हैं, फिर जितना जैसा रिएक्शन आता है फिर उस हिसाब से प्राइस वगैरह कैलकुलेट की जाती है. सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद देन देयर इज अ फाइनल इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. दैट्स इट. दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ RHP इज. सेक्शन 32. नेक्स्ट वी हैव गॉट अब्रिज प्रोस्पेक्टस. ठीक है, ये सेक्शन 33 में दिया है. See, originally prospectus is of like it's a bulky document. ठीक है, yes, it might consist of 500 pages also. So being a general public like us, क्या आपको लगता है कि हम लोग 500 पेज पढ़ेंगे? Come on यार, पढ़ाई का तो 5 पेज पढ़ लेते तो नींद आ जाती है, prospectus का 500 पेज पढ़ेंगे? How it is possible? So just to cut it short, just to make it more realistic, there is this kind of abridged prospectus which the company has to issue with their prospectus. तो देखो, abridged prospectus is the kind of brief summary of the prospectus, जो वही इंफॉर्मेशन दी रहेगी जिसके थ्रू आप अपना डिसीजन बना सकते हो. ठीक है, ओके. इट कंटेन्स मटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन. मटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही दी रहेंगी अब्रिज प्रोस्पेक्टस में, जिसके थ्रू आप डिसीजन बना सको और रीजन्ड प्रूडेंट वाला अपना डिसीजन आप ले सकते हो. इट कंटेन्स दोज फीचर्स विच आर स्पेसिफाइड बाय द सेबी. और सेबी ने भाई देखो पॉइंटर दे रखे हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स अब्रिज प्रोस्पेक्टस में बताना है. अदरवाइज कंपनी अपने मन का कोई भी इंफॉर्मेशन दे देगी, आप मिसलीड हो सकते हो, उसके बाद फिर हो जाएगा
आपका पैसा हो जाएगा खराब, आपका पैसा जाएगा डूब। सो दैट इज वाई फॉर दैट पर्पस देखो सेबी का तो फॉर्मेशन ही हुआ है टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। तो जो स्कैम हुआ था ना 1992 वाला, उसके बाद ही देखो आपका सेबी एज एन रेगुलेटर आया था to save the sentiments of the investors. So for that reason, yes, that is why SEBI has provided the bullet pointers, the bullet informations which has to be mentioned under the abridged prospectus. So section 33 of the act provides that no form of application for the purchase of any of the securities of the company shall be issued. Okay. तो जो भी आपका application form होता है for the subscription of the shares, that has to be annexed with the abridged prospectus. It is mandatory according to section 33. अगर आप application form ले रहे हो to purchase the shares, it will be annexed with the abridged prospectus. Why? The logic is quite simple, so that you can understand that what is the powers and functions of the company, what is the purpose of company, whether you should invest in that particular company or not. ठीक है? The logic is quite simple so that you can take the informed decision. ठीक है? This is what the purpose of abridged prospectus is. ठीक है? Summarized version होता है prospectus का, काफी materialistic information रहती है, जैसे कि आप लोग को अभी रिविजन क्लासेस में materialistic चीजें दी जा रही हैं. ठीक है? ओके, यही आपका abridged prospectus होता है. Last is your deemed prospectus. It is being defined under section 25. सिंपल है. देखो कंपनी, देखो प्रोस्पेक्टस बनाना इज अ टीडियस टास्क. एक सारी इंफॉर्मेशन, सारे लोगों का सिग्नेचर, इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इट हैज टू बी वेरीफाइड. क्योंकि जहां मिस स्टेटमेंट हुआ, जहां मिसलीडिंग हुई, obviously there is a huge liability against the company and the persons who are who were liable to make that statement. ठीक है, और who were responsible for making that particular statement. So the point over here is that deemed prospectus क्या होता है कि कंपनी आप अपने से काम नहीं कर पा रही है, तो कंपनी इज गोइंग टू हायर एन इंटरमीडियरी. और ऐसे इंटरमीडियरी इट कुड बी एन एनी काइंड ऑफ इशूइंग हाउस, मर्चेंट बैंक होते हैं. कई ऐसे कंपनीज होते हैं, कई ऐसे एंटिटीज अलग से होती हैं जो कि इनका काम ही यही है. ठीक है, क्या काम है? प्रोस्पेक्टस बनाना, ठीक है, प्राइस वगैरह डिटरमाइन करना, बुक बिल्डिंग, बहुत चीजें होती हैं. ठीक है, कंपनी की भी. तो द कंपनी इज गोइंग टू हायर एन इंटरमीडियरी, और इंटरमीडियरी ये सब आपका काम करेगा, प्रोस्पेक्टस बनाएगा, प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, अलॉटमेंट करेगा, सारा हेडेक उसका होगा. ठीक है. सो अगर intermediary is issuing these kind of prospectus, it will be known as a deemed prospectus. ठीक है. And yes, you have to also note that these intermediaries, they are not part of the companies. Okay. So the company offers securities for sale to the public. The document will be considered as a deemed prospectus through which the offer is made to the public for sale. That's it. Okay. Deemed prospectus यही होता है कि when the company is issuing prospectus through the intermediary, then these kind of prospectus is known as deemed prospectus, and it is defined in the section 25. चलो, लास्ट पार्ट है प्रोस्पेक्टस का, which talks about misstatement in prospectus. As I have already mentioned that whatever information has been given in the prospectus, it should be true, it should be verified by the persons, by the key people, by the persons who are responsible for making that prospectus. If they are not doing, obviously criminal liability लगेगी या civil liability लगेगी. Criminal liability will be is covered under section 34. In case of criminal liability, CRPC will be applicable, as simple as that. And to apply criminal liability, mens rea must be proved. ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा आपके प्रोस्पेक्टस में. इट विल प्रूव कि हाँ भाई गिल्टी माइंड है, गलत इसका था. ठीक है. सो क्रिमिनल लाइबिलिटी विल बी अप्लाइड. एंड ये सेक्शन 34 में दिया है. पनिशमेंट आपका सेक्शन 447 में मिलेगा. ठीक है, वहां पे फ्रॉड वगैरह का वहां पे दिया गया है पनिशमेंट. एंड एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड द प्रोस्पेक्टस, जस्ट अ मिनट, एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड प्रोस्पेक्टस, सब लोग लाइबल होंगे फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी. ठीक है, सेक्शन 34. नेक्स्ट इज योर सेक्शन 35, सिविल लाइबिलिटी. सिविल लाइबिलिटी है तो CPC इज गोइंग टू अप्लाई. एंड टू अप्लाई द सिविल लाइबिलिटी, द लॉस और डैमेज मस्ट बी प्रूव्ड. ठीक है, लॉस
कितना हुआ है जनरल पब्लिक को, पर्टिकुलर पर्सन को, तो वो प्रूव करना होता है। एंड सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग द कंपनसेशन विल बी पेड। एंड कौन करेगा? द की पीपल, द कंपनी, डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट, ये सारे लोग लाइबल हो जाएंगे टू पे द कंपनसेशन। दैट्स इट। So this, with this we are done with the prospectus. Private placement आपको next class में कराऊंगी। Okay, so that was the concept of prospectus. So is there any doubt with respect to prospectus? Yes. Any doubt? Any doubt? Please type yes. If it is there, please type no. If it is, there is no doubt. Deemed prospectus. No? Deemed prospectus. I hope it is visible now. Yes.